Hello everyone, welcome to Manika IAS. Today's newspaper was full of very insightful articles, बहुत important topics थे, prelims point of view से भी, mains point of view से भी. So let's dig into the articles. So the five topmost articles were, first is your India's 2026 IT rule amendments. AI की एज में IT के रूल्स का भी अमेंड होना जरूरी था, इसलिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तो पहले आई थी, बट अब गवर्नमेंट ने IT अमेंडमेंट लॉ भी निकाल दिया है, तो विल लुक इनटू दैट. Then is your removal of Speaker of Lok Sabha. Third is your India's struggling aviation sector. ठीक है, रिसेंटली एविएशन सेक्टर बहुत स्ट्रगल किया इंडिया का, तो विल लुक इनटू दैट. देन इज योर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोरल्स, विल डिस्कस दैट ऑल्सो. एंड देन द एंड ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी. ठीक है, हम इसको भी देखेंगे क्या एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स मोर सो आपके मेंस के लिए, मेंस में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. प्रीलिम्स की बात करो तो ये वाला टॉपिक एंड दीज टू टॉपिक्स आर की टॉपिक्स फॉर योर प्रीलिम्स. Okay, so we'll look into these articles one by one. Okay, let's look into the very first article, which is your IT rules. Okay, see 2026 की जो IT Amendment Act है, उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है, क्यों आया? बिकॉज AI ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया, तो उसके जो भी आप डिफेक्ट्स देखते हो, मिसयूज देखते हो, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिस वाज इम्पॉर्टेंट एंड इट वाज necessary. So that is why government has come up with these rules. Okay, so the most important thing from here is, जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और मेंस में भी पूछ सकते हैं, is your definition of synthetically generated content. कि हम यहाँ पे किस कंटेंट को रेगुलेट कर रहे हैं. AI जनरेटेड है, तो इस कंटेंट की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो डेफिनेशन हियर इज any audio, visual or audio visual information which is artificially or algorithmically created, generated, modified or altered using a computer resource in a manner that such information appears to be real, authentic or true and depicts or portrays any individual or event in a manner that is likely to be perceived as indistinguishable from a natural person or real world event. So हो क्या रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो, we are not able to differentiate between a real content और an artificial content. ठीक है, AI की हेल्प से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो. यू कैन जनरेट म्यूजिक, यू कैन जनरेट वीडियोज, यू कैन जनरेट पिक्चर्स, एवरीथिंग. तो जितना इसका बेनिफिट है उतना इसका मिसयूज भी है. So that is why in order to regulate this domain, government has come up with the notification with the amendments that will help in regulation of these things. Okay, तो ये important है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस आल्सो, एज वेल एज मेंस के अंदर एनालिसिस भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो विल लुक इनटू इट. दिस, सी, दीज आर द प्रोविजन ऑफ द रूल्स. ठीक है, सो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन. कोई भी आर्टिफिशियली कंप्यूटर की हेल्प से जनरेट किया हुआ कंटेंट इज रेफर्ड टू एज सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट. It can be a audio, it can be a visual, it can be a audio visual, right? ठीक है, so this is what qualifies as a synthetic content, and also that has to appear like a real content, if you are not able to differentiate between them, right? So what is the very first provision is mandatory AI label. So if I am creating some content, imagine I am a content creator, I am creating something which is artificially generated, right? Now when I am uploading it into public domain on any social media platform or anywhere, I have to mandatorily mention that this is a AI generated content, right? If I fail to do so, the platform on which I have uploaded the content is bind to label it as a AI content within a maximum time span of 2 to 3 hours. कि अपलोड करने में, एक तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू, इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट, या मैंने किसी वजह से नहीं स्किप कर दिया, लेबल नहीं किया कि ये कंटेंट है, द प्लेटफॉर्म जिस पे अपलोड किया है, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्लेटफॉर्म कि वो 2 से 3 घंटे के अंदर उसको AI कंटेंट में लेबल करे. दैट इज मैंडेटरी. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड इज एग्जेम्पशन. कौन कौन सी? सेकेंड इज 2 to 3 आवर ऑफ टेक डाउन विंडो. ठीक है, सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट या जुडिशरी किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करती है, फ्लैग करती है
कि this content has to be taken down because it is spreading some sort of misinformation है, deep fake, nudity, any sort of content which is not legal, it's being uploaded और उसको फ्लैग किया गवर्नमेंट या जुडिशरी ने. It is the responsibility of the platform to take it down again within a span of 2 to 3 hours. पहले भी वो प्रोविजन अवेलेबल थी लेकिन दिस द टाइम लिमिट वाज 24 आवर टू 36 आवर्स. लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, द टाइम लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 24-36 आवर्स टू 2 to 3 आवर्स. ओके, दिस इज सेकंड प्रोविजन. थर्ड इज लॉस ऑफ सेफ हार्बर इम्यूनिटी. सी क्या होता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है दे हैव सम सॉर्ट ऑफ लीगल इम्यूनिटी. ठीक है, कि मतलब अगर कोई उनके ऊपर कंटेंट पुश कर रहा है, कोई इंडिविजुअल पर्सन व्हाटसोएवर इट इज, अगर वो कंटेंट डाल रहे हैं तो द प्लेटफॉर्म जनरली हैव इम्यूनिटी बिकॉज इट्स सेड कि वो उनकी फ्रीडम फ्री विल है टू अपलोड द कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म. But if the intermediary or the platform is deliberately avoiding या do not bind with the provisions कि 2-3 घंटे के अंदर फ्लैग योर कंटेंट को रिमूव नहीं किया या फिर AI लेबलिंग नहीं की, अगर वो फेल करते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो देयर सेफ हार्बर, देयर लीगल इम्यूनिटी विल बी टेकन अवे. राइट, सो इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी. सो दिस इज लॉस ऑफ सेफ हार्बर. नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पशंस. जब आप बोल रहे हो कि सिंथेटिकली क्रिएटेड कंटेंट है तो उसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी दी गई हैं. एग्जाम्पशंस आर, अगर सिर्फ कलर जैसे फिल्टर्स वगैरह लगाए हैं वो, नॉइज रिडक्शन किया है एंड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स लाइक सबटाइटल्स, उनको लेबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये AI जनरेटेड है. राइट, द कंटेंट पीस हैज टू बी AI जनरेटेड, दैट इज द कैच. Okay, so another thing is let's compare the 21 rules with 26th amendment. तो पहले क्या था, इलीगल कंटेंट टेकडाउन का टाइम था 24 to 36 आवर्स, अभी विद इन 3 आवर्स इट इज मैंडेटरी. सेंसिटिव कंटेंट को पहले 24 आवर्स का टाइमलाइन था, अब 2 घंटे का टाइमलाइन है. AI कंटेंट डिस्क्लोजर पहले वॉलंटरी था, अब मैंडेटरी है. ठीक है, यूजर डिक्लेरेशन पहले रिक्वायर्ड नहीं थी, अब अपलोड पे ही यूजर हैज टू मैंडेटरी डिक्लेयर कि AI कंटेंट है या नहीं है. स्टेट टेकडाउन ऑफिसर. ठीक है, तो पहले क्या था कि एक स्टेट के अंदर एक ऑफिसर था हु कैन टेल द प्लेटफॉर्म्स टू टेक डाउन कंटेंट पीस which they feel is not right and should not be in public domain. But in under this amendment they have allowed for multiple officers per state. So these are the provisions and in the upcoming time we'll discuss pros and cons. ठीक है, इसके as of now remember the key provisions and the features and its comparison with 21 with 26. As of now this is important. In the upcoming discussions we'll be discussing it pros and cons also. ठीक है, now let's move to the next topic which is removal of your speaker. See, why is it in news? Please understand, the opposition has said that they want to move a motion for removal of speaker. उसके लिए they have appealed that ठीक है against the Speaker of Lok Sabha, Mr. Om Birla, right? So why they are saying that they want him to be removed? Because they are saying that he has been operating in a biased manner, partiality की गई है, and in the recent budget session also, they are saying that Mr. Rahul Gandhi, who is the leader of opposition, was not allowed to speak. Okay, and there were many such cases enumerated when they were saying that they want to move a motion against him. ठीक है, so यहाँ से what is the uptake that you have to take? The important topic for you from this news article is the process of removal of speaker, which can be asked in the preliminary examination. बहुत वैसे भी इस एरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं. Since it is in news, the chances of a question coming from this section further increased. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या प्रोसीजर होता है. सबसे पहले द रोल ऑफ स्पीकर इज टू बी परफॉर्म इज ड्यूटी इन अ नॉन पार्टीशन मैनर. तो अगर आप कंपेयर करो इंडिया या फिर ब्रिटिश का, जहां से हमने ये प्रोविजन लिया, ब्रिटिश में क्या होता है कि once somebody is appointed as a speaker of the house, that person has to resign from the political party. But इंडिया में ऐसा नहीं होता, the person can still be a member of the political party, right? But as a convention they are supposed to be behaving in a non-partisan manner. Okay, so that is why let's see what is the. सबसे पहले आपको 14 day advance notice देना होता है. यही नोटिस अभी सर्व किया गया है against Om Birla, right? The notice is submitted to Secretary General and it should contain specific and non-defamatory charges. So this is the
nature and how the notice should be. ठीक है, then at least 50 member of the house should say and should be in support of moving the motion. ठीक है, 14 days पहले to the secretary general, and it should contain specific and non-defamatory charges. ठीक है, and at least 50 more than 50 members of the house should say that yes, we want to move the motion. ठीक है, so this is the initiation. Then it once the motion is moved, it has to be passed by a effective majority of the house. ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आपकी ये तीन मिल जाती हैं, कंडीशंस मेट हो जाती हैं, देन यू मूव टू द पैसेज ऑफ द मोशन इन द हाउस. तो उसके लिए यू नीड टू हैव इफेक्टिव मेजोरिटी. नाउ व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? इज अ मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस वेकेंसीज. ठीक है, सी प्रीलिम्स के लिए या यूपीएससी में इन जनरल नोइंग मेजोरिटीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजोरिटी: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एंड देन देयर इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी. फर्दर स्पेशल मेजोरिटी के भी थ्री टाइप्स हैं. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं किया है, प्लीज गो एंड रीड about the majorities. We also have a video on YouTube with respect to the majorities. I'll be giving you link in the description or somewhere in the corner, so you please go and read that also, because that is very important topic. It will give you more clarity, right? ठीक है, so this is effective majority and it has to be passed through effective majority. Now how is the participation of speaker in this entire process going to be? That is something that you need to know as well, right? सी जनरली तो स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट ही मोशन है तो हाउ द स्पीकर इज गोइंग टू प्रिसाइड. ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसीडिंग में तो प्रिसीडर विल प्रिसाइड, लेकिन रिमूवल प्रोसेस के अंदर ही कैन नॉट प्रिसाइड. इन दैट डेप्यूटी स्पीकर जनरली प्रिसाइड करते हैं. ओके, ठीक है. वोटिंग पावर नॉर्मल के अंदर ही हैज अ कास्टिंग वोट, बट इन द रिमूवल प्रोसीडिंग में द स्पीकर कैन वोट, ही कैन वोट, बट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस. अगर उनका टाई ब्रेकर वोट नहीं हो सकता. ठीक है, देन अगेन मेजोरिटी इज इफेक्टिव मेजोरिटी. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर. ओके, नाउ लेट्स सी कि आज तक कोई स्पीकर रिमूव भी किया गया है नहीं. तो इंडिया की हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई भी स्पीकर रिमूव नहीं किया गया. सो देयर वर 4 टाइम जब एक नोटिस या फिर एक इनिशिएशन हुआ था टुवर्ड्स रिमूवल ऑफ स्पीकर. First was in 1954 against G.V. Mavlankar. It was defeated by the House. Then another was in 1966. Sardar Hukam Singh. ठीक है, it was preliminary stage पे ही defeat हो गया था because more than 50 ने support ही नहीं किया था. Then in 1987 it was Balram Jhakar. ठीक है, and it was rejected by the House and currently it is in notice submission stage के अंदर है. तो we'll see how it proceed further. बट लाइकलीहुड कम है कि नोटिस पास इट विल पास. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर इंडियाज एविएशन सेक्टर. सी, इंडियाज एविएशन सेक्टर हैज ऑलवेज बीन इन स्ट्रेस, और रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारे क्रैशेस भी हुए हैं. वी हैव लॉस्ट सम ऑफ आवर पॉलिटिशियंस आल्सो. द सीरियस आल्सो डाइड इन अ प्लेन क्रैश. देन इन रिसेंट एक अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश हुआ था. एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ठीक है, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल बहुत वॉलेटाइल है एंड इट्स प्राइस डिपेंड अपॉन यूएस मार्केट के ऊपर, एंड यूएस मार्केट इटसेल्फ इज वेरी फ्रेजाइल. जब भी आपकी डिपेंडेंस किसी और मार्केट के ऊपर होगी, तब the chances of volatility in your market will be high. That is why the prices are very dynamic, very high, and it sometimes become unprofitable for the airlines to go. That is why if you see recently बहुत सारे pilots या फिर ऐसे कुछ controversy भी हुई थी कि pilots are mandated to save their aviation turbine fuel somehow by doing harsh landings or something like that. So another important thing is we have a market duopoly. That means IndiGo and Air India are the two airlines which control 90% of India's aviation sector. उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडिगो के पास है. More than 60% of India's aviation sector, जितना भी fleet है, they are operating. That is why they were the one who were highly they faced the issue in the recent past. ठीक है, उसका रीजन भी यही था कि गवर्नमेंट ने एक थोड़े से पायलट्स वेलफेयर के लिए या फिर स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग इश्यूज किए थे, जिसमें दे सेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अ पायलट कैन ऑपरेट इज 60 आवर्स. ठीक है, इन अ वीक, which is again more than the
standard, global standard is 40 hours, but knowing the capacity that we had, Indian government ने कहा था 60 hours, but वो भी possible नहीं था because they were running so short on pilots and the fleet and the crew and everything. That is why they had the issue. Second was, and the third issue is कि अगर आप DGCA का ऑपरेशन भी देखोगे, there is a shortage of technical staff. 50% of the seats are vacant in DGCA. So this is also an issue. फर्दर अगर हम बात करें तो इंडिया में राइट नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ पायलट्स आर 7,000, ठीक है, लेकिन डीजीसीए ने इन दिस ईयर हैज अप्रूव्ड given licenses to 5,600. So there is a shortage of pilot in that also. Further, because India is a growing economy in terms of aviation sector also, but otherwise also, the demand of pilots is going to be 25,000 to 30,000. But we have seen कि जितने भी major airlines है, they are compensating for their needs by calling pilots from outside because pilot training in India itself is very expensive. So that is why the gap is going to be there. And to break the duopoly also, the government has given licenses to new airlines like Shankh Airline and Fly Air, AI Hind, these three airlines, but they'll be operating in regional. One is in Kochi, another is in UP, third is in Telangana. So these three areas, airlines. So, but still, there are a lot of gaps that need to be plugged in when you see aviation sector because a lot of airlines have constantly failed, starting from Kingfisher to coming in 2024 Vistara, which was then acquired by Air India. So the sector has always been under stress. So let's see what other reforms can be taken and when and how they'll be taken up. Okay. Now let's see the next. Okay. So this here, if you see the issues, pilot to aircraft ratio we have seen is 14. Okay. And globally the requirement is 18 to 20 spare crew capacity. Now in जब भी आप ऑपरेट करते हो तो यू हैव टू हैव अ स्पेयर क्रू, ठीक है, कि मतलब 25%, 20 to 25% एक आपके पास स्पेयर क्रू हमेशा होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी. बट इंडिया 0% उनके पास स्पेयर क्रू होता है. वी दे प्रोड्यूस दे टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इज देयर. So that is the problem because अगर emergencies है so there is nobody to give backup, right? Then you have market concentration. We have discussed 90% by two major giants, ठीक है, and that need to be distributed to have more competitive pricing also. Then you have weekly work hours 60 hours है. Global standard में we have discussed 40 hours होना चाहिए, but 60 hours maybe the airlines are not able to meet the demand. So that is the problem. ठीक है. Then technical vacancies we have discussed, right? So now let's see another topic, next topic, which is your climate change and coddles. So इस topic के ऊपर आज न्यूज़पेपर में दो आर्टिकल्स थे, ठीक है. सो बोथ आर्टिकल्स का एसेंस ये था कि ड्यू टू इंक्रीज इन climate, increase in temperature, climate change, pollution, and other deforestation activities, etc., lot of other animals like butterflies, corals, and other animals, they are losing their own color. ठीक है. So there are two rules that can directly be asked in your prelims examination. वो rules हैं ये, Bogert's rule and Gloger's rule. So Bogert's क्या बोलता है? This is applicable to blooded animals. It says कि animals in colder region will be darker, ठीक है, and those in warmer region will be lighter. ठीक है, कि heat जहाँ पे heat ज्यादा होगी वहाँ के जो cold blooded animal है वो lighter in color हो जाएंगे. Gloger is exact opposite because it applies to warm-blooded animals. It said, it says कि animals are darker in areas with high humidity, that means high melanin production and rainfall, and lighter in colder and drier regions. So आप इन दोनों को प्लीज याद रखना because prelims के अंदर MCQ आ सकता है, ठीक है? तो please remember this. Now see what are the reasons and what are the changes they are causing to animals. सो मराइन हीट वेव्स की वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, दे आर टर्निंग इनटू वाइट, ठीक है, इंडिया के अंदर या फिर कोरल बेल्ट जहाँ पे भी है. टेरेस्ट्रियल हीट वेव्स की वजह से इंसेक्ट पिगमेंटेशन लॉस हो रहा है, दे आर टर्निंग लाइटर. हीट के अंदर इंसेक्ट्स आर टर्निंग लाइटर. डिफोरेस्टेशन की वजह से बटरफ्लाई आर लूजिंग कलर, ठीक है, अमेजोन ट्रॉपिकल रीजन के अंदर. पोल्यूशन की वजह से ओशन का ग्रीनिंग हो रहा है, एल्गल ब्लूमिंग हो रही है,
which again is fueling coral bleaching. ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन के अंदर हो रहा है. ठीक है. Now let's see how corals are getting impacted. See, so this was another article about it. ठीक है. So it says there are two global coral bleaching event. Third occurred in the period of 2014 to 17 जहाँ पे 51% of reefs were bleached. ठीक है. See what is corals? They are a symbiotic association. अब जब भी ये symbiotic association break हो रहा है and algae are getting released, that is leading to whitening the of the coral itself. ठीक है. So this symbiotic breakdown leads to expulsion of algae, which gives its color to itself. ठीक है. And it's a 90% of energy resource. That means your corals are dying because of higher heat in the marine atmosphere. Another thing is there's something called ratchet effect. Now, what is this effect? It says कि जब भी कोरल ब्लीचिंग होता है तो कोरल नीड सम टाइम टू अगेन redevelop themselves, right? But heat waves are striking so hard back to back that corals are not able to revive themselves, leading to permanent damage and diminishing of the corals. So this is called ratchet effect. ठीक है. Now, the third global bleaching event, as we have discussed, already occurred in 2014 to 17, where 51% of corals were bleached, and the fourth bleaching event is already underway. It started in the end of 23. ठीक है. So they are essential for marine ecosystem, and if they are getting diminished, that means marine ecosystem is getting hampered, and which will have a lot of other effects which are unseen till now. ऑल राइट. सो द थिंग इज कि इट सेज कि अगर 1.5 डिग्री का जो है वार्निंग जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की हमने प्रिडिक्ट किया है कि अगर 1.5 डिग्री क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर वो क्रॉस होता है जो कि ऑलरेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, इट 90% ऑफ कोरल्स विल डाई डाउन. ठीक है. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. 99% 2 डिग्रीज पे हो जाएगा. So that is why cutting down the carbons are mandatory, but global uh, countries are, though they are taking steps, but the effective result is very low in terms of reducing the carbon count, but that's not happening as such. So this is the issue. So remember the ratchet effect, what is saying, and also remember third global bleaching event and fourth global bleaching event. They can be direct questions in your prelims. Okay. Then comes your next topic, which is start. So what is it? See, Cold War was basically between US and USSR. ठीक है. So there was a sort of arm race that began, जहाँ पे both of the countries they started acquiring a lot of nuclear weapons. So, in order to prevent a nuclear war amongst each other, there were a lot of initiatives that were taken so that both of the countries they don't get into nuclear war, because world was not ready for another war after first and second world war, right? So in that the very first attempt was salt 1 and salt 2. ठीक है. It capped the number of strategic missile launchers rather than the warheads. ठीक है. इन्होंने एक बारी के लिए बोला था कि halt the production. So at this point 10,000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे दोनों कंट्रीज के पास इंडिविजुअली. सो व्हाट दे वांटेड वाज कि बस इसके डू नॉट प्लीज ग्रो फर्दर. तो उन्होंने एक लिमिटेशन लाई थी ग्रोथ के ऊपर. ठीक है. देन कम स्टार्ट 1. ठीक है. दे सेड कि व्हाट यू हैव राइट नाउ इज 10,000, प्लीज रिड्यूस इट टू 6,000. So there was a 30% reduction in arsenal, right? Then came the definition of START was Strategic Arm Reduction Treaty. This was limitation talk and this was reduction treaty. Okay. Then came SORT, which is also known as Moscow Treaty. It reduced operationally deployed strategic warhead to 1700 to 2200. Okay. So it again further decreased the number जो start one में थे. Then came the new START, which was currently going on, and it is in news because this ended on 5th of February. 5th February को this new START has ended and there is a need कि इसके बाद भी कोई treaty आए. So what was this new START? It says कि both the countries, the then USSR and the current US, they should cap
the warhead to 1550, right? So the lowest number they were further reduced. अभी recent क्या position है कि there is no such treaty. So how are you going to restrict the use of nuclear weapons? So the articles also argued कि जो आपकी non-proliferation treaty है, which is slightly not in favor of the developing nations like India, but in the favor of countries like US, that they are allowed to have nuclear weapons, but we are not allowed to have nuclear weapons. So उन सारी treaty को renegotiate you can do, but as of now the treaty has ended, the new start has ended, so you can expect a question around nuclear disarmament in your GS paper 3 or GS paper 2 also, ठीक है, international relations में वहाँ पे you can get a question in your main, so be prepared with this. In the upcoming times we'll have more such articles surrounding this area, so we'll keep updated, ठीक है. And if you want the PDF and PPT of this particular session, you can get it from the Telegram group. So thank you, have a nice day.